Hello. Greetings, guys. Welcome to another episode of the Uncapped Indians. We are here after match number 55 between Mumbai Indians and Sunrisers Hyderabad. And to our surprise and to our shock, Mumbai Indians has defeated Sunrisers Hyderabad, and we thought that the result is definitely going to be Sunrisers' way for the kind of cricket that they were playing and for the kind of disintegrated team Mumbai Indians have been throughout the season. But yeah, I mean, unfortunately, Pat Cummins this time around, could not turn in. Just get come over to the right side of the result. Even though the other team at the opposition, was wearing a blue jersey. Ankit, मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल करना चाहता हूँ, मतलब योर फर्स्ट थॉट्स ऑन द गेम टुडे. इट वॉज गुड सूर्य कुमार यादव को फॉर्म में आते देख के अच्छा लगा यार. आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग सूर्य कुमार यादव जो फॉर्म में आए हैं. हाँ, वो भी थोड़ा स्ट्रगल किए स्टार्ट में बिकॉज भुवनेश्वर कुमार का जो फेरी स्पेल था, इट वाज समथिंग एल्स टुडे. भुवनेश्वर कुमार अगेन. और उन्होंने वो पार्टनरशिप बनाई तिलक कुमार के साथ. इसके बाद ही गॉट जैसे वो स्टार्ट करते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, इसके बाद देन अगेन ही स्टार्ट पिकिंग द बॉलर्स and start hitting across the boundary. So yeah, but the best part is, I feel like कि हार्दिक पांड्या फिर से bowling as a bowler फॉर्म में आ रहे हैं. He picked up 3 wickets. That's really nice. That's really nice. ठीक है, आप रन दे रहे हो, सब रन दे रहे हैं इस पूरे T20 में, सब रन दे रहे हैं 7 की इकोनॉमी से. ठीक है, कोई नहीं, चलता है. आप विकेट लो बस, which is good. गुड से याद आया, मतलब ध्वनिल, नाउ अप्रोचिंग द वर्ल्ड कप, एवरीवन वाज सेइंग यार इंडियंस फॉर्म में नहीं है, इंडियंस फॉर्म में नहीं है, सब जीरो पे आउट हो रहा है, कभी कोई कुछ मतलब विकेट नहीं निकाल रहा है, बहुत ज्यादा रन दे रहा है, ये वो फलाना. बट somehow it was good to see, first of all, Hardik, as rightly mentioned by Ankit. But what did you think about Surya Kumar Yadav today? I mean, he just took the game apart. सूर्य कुमार यादव के लेफ्ट आर्म पे एक टैटू है जिसपे लिखा है लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, और उसके लेफ्ट लेग पे एक टैटू है जो है वन स्टेप एट अ टाइम. 2014-2015 की बात है. ही वाज वेरी हॉट हेडेड एंड इनडिसिप्लिन, और उसकी रणजी ट्रॉफी मैच चल रही थी मुंबई वर्सेस मध्य प्रदेश, जहां पे उसकी लड़ाई हो गई शार्दुल ठाकुर के साथ. दोनों को एमसीए ने बुलाया और बोला कि भाई ये सब तो नहीं चलेगा, एंड दे गिव हिम अ स्टर्न वार्निंग. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम probably he was stripped off with the Mumbai captaincy also in 2015. एंड देन ही मेड हिज एक्चुअल कमबैक. उसने क्या किया कि वो पहले शाम में ट्रेनिंग करने जाता, ठीक है. फिर उसने क्या किया, दोपहर के 12 बजे से 3 बजे ट्रेनिंग करता, लाइक पुटिंग हिमसेल्फ अंडर दैट प्रेशर. ही बैट्स अगेंस्ट स्पिन सो वेल, क्योंकि उसे ना बॉम्बे में लाल सॉइल होती है और वो टर्न होती है बहुत ज्यादा, तो उसने उन पिचेस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी. तो अभी जो हम सूर्य कुमार यादव को देखते हैं ना, बड़ा कूल सा बनता है, दिस दैट दैट्स कम आउट ऑफ अ वेरी लॉन्ग जर्नी. ही इज मेड हिज डेब्यू एट द एज ऑफ 30. Okay, he had shots all across, but his shots on the offside were a little limited. That's when Mahela Jayawardene came in and told him to play shots that are straight towards the boundary, long off, cover, extra cover, and just time the ball well. So apart from the ramps and everything, the offside armory was added by Mahela Jayawardene. And it's fascinating to see that Mahela Jayawardene was a proper cricket batsman, makes an entire Surya Kumar Yadav, who's a 360-degree batsman, promotes him up the order, opens for Mumbai, bats at 3. With KKR, when he was there, he used to bat in the death over. So Surya Kumar Yadav is not just a person who's 360 in terms of how he hits the ball, but you put him in any order, he will play. And today it showed. He will make sure that in this T20 World Cup, Surya Kumar Yadav will genuinely perform, because he's got that hunger, he's got his head in the right place, and now he's willing to, and he's unlearned everything that he's learned for 8 to 10 years just to get back on track. So yeah, Surya Kumar Yadav ऐसी शॉट नहीं लगाता है. Nicely summed up. Head in the right place से याद आया एक और बंदा जो खेल रहा था. उसका नाम है ट्रेविस हेड. ठीक है, उसने आज भी एक अच्छा स्टार्ट दिया. पर यार लोग, अंकित, बार बार यही कहते रहते हैं यार कि ये बंदा ना लकी है, ये मतलब टैलेंटेड नहीं है, बस इसका लक चल रहा है, इसलिए मतलब ये चल रहा है इतना ज्यादा. पर डू यू थिंक दैट there's more to Travis Head than what people talk about? नो यार, ट्रेविस हेड सिर्फ एक ही टाइम लकी हुआ था जब वो 20 साल का था, उसका कार का एक्सीडेंट होता है. एंड वेयर ही सर्वाइव दैट टाइम, आई फील लाइक ही वाज लकी.
जहाँ पे उसको हेड और बैक में काफी सारे सिक्सेस आते हैं। फॉर हिज क्रिकेटिंग जर्नी ब्रिस्बेन से बीबीएल खेलता था 2016 और 15-16 में, जहाँ पे वो काफी नाम करता है। एंड बट ही कुड नॉट बीन पिक्ड अप बाय ऑस्ट्रेलिया टीम, बट जब बॉल टैम्परिंग सागा होता है देन ही वॉज कॉल्ड। और इसके बाद फिर 2019 में उसको वर्ल्ड कप में नहीं लेते हैं। देन वो जेल से जाके बात करता है कि यार सर मैं पिक्ड अप नहीं होता। देन उसको जेल बोलता है यार तुम अपनी बैटिंग पे काम करो। हम्म, एंड ही हैव done so brilliant in red ball also and a white ball also. Talking about red ball, his stats, हमने ऐसे मैचेस देखे हैं जहां पे ब्रिस्बेन में 30 पे 4 हो गया था ऑस्ट्रेलिया, वेर इन ही पिच्ड इन एंड स्कोर्ड 92 रन। होबर्ट में 12 पे 3 हो गया था ऑस्ट्रेलिया, जहां पे वो आता है और सेंचुरी मारता है। समार जोसेफ वाला टाइम पे याद होगा सबको, जब लोग 40 रन भी नहीं बना पा रहे थे, उसने 100 रन बनाए। द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव सीन एज अ ट्रेविस हेड, जो मैंने ओवल में देखा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपनी आंखों से, जहां पे वो नो ही स्टैंड स्टिल along with स्टीव स्मिथ एंड स्कोर्ड 163 रन्स, जहां पे स्टीव स्मिथ 121 रन बनाते हैं। उनके विकेट चले जाते हैं ना, विद इन 100 3 विकेट चले जाते हैं। मार्नस लबुशेन चला जाता है, डेविड वार्नर चला जाता है, इसके बाद फिर अपना ये उस्मान ख्वाजा 0 पे आउट हो जाता है। हम्म, सो दिस इज हाउ इट इज जर्नी। वो लकी नहीं है यार, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। उसने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर। और हम्म, सेम उसने वो 2023 में फाइनल में भी उसने, जहाँ पे पता है डेविड वार्नर चला जाता है 7 रन पे आई थिंक, फिर हम्म, 15 रन पे चला जाता है मिच मार्श, हम्म, उसके साथ सिर्फ एक बंदा खड़ा होता है जो था स्टीव स्मिथ, भी आउट हो जाता है, वो और मार्नस अगेन, हम्म। वेयर इन स्कोर्ड 137 रन। तो यार उसका एक पैशन है यार क्रिकेट को लेके। लकी आई डोंट फील लाइक ही, उसकी मेहनत है यार ये। हाँ एज लग के जाता है, वो लोग बहुत बोलते हैं आज भी, जैसे आप लोग लकी बोलेंगे उसको, क्यों पता है लोग ऐसे लकी में क्यों ले रहे हैं? हम्म। आज भी आउट हुआ तो नो बॉल हो गई। ठीक है यार, होता है। दिस इज क्रिकेट, दिस इज हाउ इट ट्रेविस इज ऑल अबाउट ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड के मेहनत का रंग भी ब्लू ही लग रहा है मुझे। ब्लू से याद आया आज यार, आपने हार्दिक पांड्या की बात करी अंकित, और मेरा सवाल ये धोनी से रहेगा। धोनी, इट्स ग्रेट टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल हार्दिक coming back and then hitting the lengths that we know that he does Yeah, hit, and gets the ball to yeah, swing and seam. yeah. And but there was this young statesman called Piyush Chawla, who's actually been doing the job for Mumbai, for quite some time now, and comes up, Yeah, just crosses the ball up, okay, and picks up the yeah, wicket. I remember this instance in the game, where he got hit for two sixes, and then he yeah. tosses up the next ball and he gets a wicket. So, I mean, अगर सिर्फ सीनियर स्टेट्समैन की बात आती है, तो मतलब सिर्फ क्या कहते हैं, पीपल इन येलो और मे बी a few people in blue here or there, वो सिर्फ उतना नहीं होता, बट आई थिंक there are other people who are also doing well. तो यार पीयूष चावला ना लेग स्पिनर। लेग स्पिनर का क्या होता है ना कि आप मार खाओगे लेकिन आप विकेट। जो टॉप 5 आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर है ना, उसमें 3 लेग स्पिनर, उसमें से एक पीयूष चावला है। हाँ, और पीयूष चावला ने आई थिंक बहुत टाइम पहले टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, उसमें भी काफी सारे विकेट लिए। एंड पीयूष चावला समवन हु आल्सो बैट्स रियली, ही इज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ही बैट्स आल्सो रियली वेल। एंड लेग स्पिनर बनने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा। ठीक है, जब आपको 60 मीटर 70 मीटर की बाउंड्री मिलती है ना, तब हाँ, बॉल टॉस करना, और ये कि भाई या तो ये जाएगा बाहर या तो आउट होगा, वो जिगरा चाहिए। आपकी फील्ड प्लेसमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, आपके पास वेरिएशंस बहुत सारे होने चाहिए। आपको गूगली होना चाहिए, फ्लिपर होना चाहिए, टॉप स्पिन होना चाहिए, तो वन दैट गो स्ट्रेट होना चाहिए। और पीयूष चावला बहुत टाइम से खेल रहा है, ही प्लेड फॉर यूपी एट टाइम एंड यूपी वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग टीम इन द रणजी ट्रॉफी। सो यार ही इज अ वेटरन, ही इज बाउंड टू डू सच थिंग्स। या एंड मूविंग ऑन टू द सेकंड इनिंग्स, सूर्य कुमार यादव के बारे में बात कर ही चुके हैं, तिलक वर्मा वी ऑलरेडी स्पोकन कि किस लेवल पे वो अभी बंदा खेल रहा है। पर पैट कमिंस ने आज एक तरीके से तने तनाए वहां पे भी उसने बैटिंग करी, जहां पे उसके 35 रन बने। बट डू यू थिंक दैट सनराइजर्स प्रॉब्ली कुड हैव बोल्ड अ लिटिल बेटर अंकित, जहां पे सिर्फ 3 ही विकेट गिरी? क्योंकि एक टाइम पे मुंबई ऑलमोस्ट 30 for 3 थे, तो वहां से आई थिंक गेम को और क्लोज ना लेके जा पाना थोड़ा सा कहीं कंसर्न है सनराइजर्स की बॉलिंग के लिए। नो यार, आई थिंक they वर शॉर्ट बाय 20-25 ऑड रन।
जहाँ पे मुंबई में यार 200 तो चाहिए ही चाहिए यार आपको। ठीक है, एक वहां पे हुआ। दूसरी सेकंड चीज, सूर्य ने चांस ही नहीं दिया यार। और तिलक ने भी बहुत अच्छा किया कि आप when you see someone is striking really well, the best thing you give a strike to that particular person. तो तिलक वर्मा ने स्ट्राइक रोटेट करके हमेशा सूर्य को ही सामने रखा, जो भी बॉल था, एंड दे टारगेटेड। उन्होंने नटराजन को टारगेट किया, एंड दे स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन अगेंस्ट नटराजन। सेम गोज टू पैट कमिंस ऑल्सो। यस, पैट कमिंस वैसा रन नहीं दिए जैसा नटराजन ने दिया, एंड दे टारगेटेड नितेश रेड्डी टू। तो यार इट वाज लाइक नहीं, चांस नहीं दिया सूर्य कुमार यादव ने। देयर वाज नो, आई कुड नॉट फाउंड एनी एरर, कि जहाँ पे उन्होंने कोई रैश शॉट खेला हो, या फिर कैच ड्रॉप हुआ, या फिर कोई चांस भी बना हो। सो यार इट वाज लाइक दैट। Right. So this result has actually, caused a little bit of chaos on the points table. Now we have almost three teams at the same points. The net run rate obviously is going to play a major role, and even RCB has now its calculators out. So moving on to the next game, which is tomorrow, we have Delhi Capitals taking on Rajasthan Royals at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. Dwanil, your first thoughts? कौन जीतने वाला है? क्या होने वाला है कल? Rajasthan Royals. I think they want to bounce back from before they enter before they enter the playoffs. They want to get their 11 right. They want to see who's their main batsman or a lot of batsmen in form. They want to see who's going to be their strike power play bowler. They want to make sure that the death bowler is in check, and they have quality spinners, so they want to get back in form. So I think Rajasthan will put its best foot forward, because now it's for them, it's about playing the playoffs rather than being top one or two of the team. अंकित, क्या लगता है कि मतलब कल कोई स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगी दिल्ली? बिकॉज दिल्ली राइट नाउ फॉर देम इट इज अ मस्ट विन गेम, क्योंकि मस्ट अभी विन वो गेम, 10 पॉइंट पे है और उनके पास एक गेम कम भी है. सो दे विल डेफिनेटली ट्राई एंड स्नीक इन अ विक्ट्री हियर इफ दे कैन पॉसिबली. एंड राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट अगर एक विक्ट्री मिलती है तो उसका मोराल भी इट्स अ काफी. वेरी हाई बूस्ट। यस. बहुत बहुत तो क्या बहुत लगता है हाई क्या बूस्ट क्या रहेगा। स्ट्रैटेजी रहेगी? वही बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड. Yes, absolutely. Bat put, and put run on the board, because उनके पास वो है, स्ट्रेंथ है। डीसी के पास, दिल्ली कैपिटल के पास वो स्ट्रेंथ है कि वो स्कोर अच्छा खड़ा कर सकते हैं। बट यही है कि उनके कुछ बैट्समैन क्लिक नहीं कर रहे हैं। एक या मैच में चलते हैं, फिर दूसरे मैच में नहीं चलते हैं। दे नीड अ पावरफुल ओपनर। यस, जेक उनके पास है, देयर इज नो डाउट, बट जेक का भी कोई साथ देना चाहिए अदर एंड से। दे आर शफलिंग टू मच इन देयर ओपनिंग पेयर। अगर वो कल उन्होंने सेटल कर लिया, देन विल बी गुड फॉर डीसी। Probably they can do better with the ball also, when you are having a Kuldeep in your setup, bowling setup. You never know. But It's going to be very for sorry. It's going to be very interesting to see how Rajasthan reacts to JFM and whoever opens with him, either Shaw or Warner, because Rajasthan is a team that has Trent Bolt, who's a power play specialist, and they have JFM, who's going berserk. So I think it's going to be a really interesting contest on how Rajasthan approaches these two batsmen, and if they, because Rajasthan plans a lot, so I'm sure they have a plan. So it's going to be very, very interesting to see that. Talking of JFM, a lot of people in Australia obviously are a little disappointed. They know that he couldn't make it to the World Cup. और वर्ल्ड कप से बात करें तो ऑब्वियसली जिस सारी न्यूज अभी चल रही है इन द मार्केट, आई मीन it's a little disappointing, with a lot of terror threats and this and that, and with this World Cup being very very important for West Indies cricket. Dhanil, your take on that? Uh, Johnny Grave, he's the CEO for Cricket West Indies and this T20 World Cup. And he said that between now and 2031, this is the only ICC tournament that the West Indies is going to host. And the reason why they've done and hosted with USA is because they fall in a time zone where they want to capture maximum audience. And having USA as a market, that means that they're going to have high value sponsors and broadcast. An interesting fact that he said that the revenues that West Indies Cricket Board receives from ICC has dropped from 7% to 5%.
West Indies Cricket Board is what spends the most amount of money among all cricket boards on airline travels because they're a little far off. They spent about $2 million to send a test team to Australia, and they almost earned nothing out of it. They're upset with the ICC that they need an increased financial support. West Indies Cricket Board is the only team that gives an NOC to all its players to play any league that they want, even if that Yeah, sacrifices national duty. They said you can go play any league, and it's not like the IPL where four foreign players are allowed, and some of them there are six, nine, five. It doesn't matter. It's not restricted to four. So there are more West Indian players opting for it because as a cricket career in West Indies, you don't have a lot of financial benefits. Even to hold first class matches for them is a big challenge. West Indies did not qualify for the 2023 World Cup. They did not even make it to the Super 12 in the 2022 World Cup. So for West Indies right now, this particular World Cup is very important to get their finances right. If they get their finances right, they can have a strong domestic tournament. They can probably create that thing in players that play for the national team. You will sort of have more money and not play for leagues, and that will create a stronger West Indies side, which will enable other countries to call them and play challenging cricket rather than have a subpar team while your best players are playing league cricket. So I hope that doesn't happen. In fact, Rajiv Shukla mentioned that about this that it is the responsibility of the West Indies Cricket Board to ensure safety, and yeah. if there are safety threats, then we'll have to take decisions accordingly. So I hope and pray to God that they do it because it's a big financial risk for them. There is no other tournament, ICC tournament till 2031 for West Indies. So all the best, guys. There we go. Wise words. Abhi, honestly speaking, for me also, this is very, threatening. एक तरीके से वैसा न्यूज़ है कि यार इतने टाइम बाद वहां पे कुछ हो रहा है, आफ्टर Correct. 2010 probably, Yeah. द Yeah. T20 that was hosted, उसके बाद वहां जाके अब हो रहा है, बट इट Hmm. इज वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि मतलब यूएसए में भी और मतलब वेस्ट इंडीज में भी दोनों जगह आपको क्या कहते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ थ्रेट्स मिल रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स फॉर जस्ट द फैक्ट एंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रीजंस एसोसिएटेड विद द गेम, you have threats going, at least for, there's a huge threat for the India Pakistan game as well. So something that obviously is not really done, and yeah, of course, whoever's behind it, 2000 2007 में गलती कर दिया वेस्ट इंडीज बोर्ड। 2007 में वेस्ट इंडीज बोर्ड ने ना वेस्ट इंडीज, अगर आप मैच देखो ना तो वो ड्रम्स लेके आते हैं, कूलर किट्स लेके आते हैं, फ्लैग लेके आते हैं, डांस वांस करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। दैट इज एक्चुअल वेस्ट इंडियन क्राउड दैट वांट्स टू सी दोज मैचेस। उन्होंने ना 2007 में उनको अपील नहीं किया इतना कि आप आओ ऐसे करो, फन फेयर नहीं किया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फन फेयर उस गेम में वो लाना चाहते हैं कि भाई चलो जहाँ यहाँ के लोग हैं वो देखने आए ताकि स्टेडियम में टिकटें बिके, बट अब क्या इस थ्रेड के बाद क्या आप लाने दोगे उन्हें कूलर बॉक्सेस, फ्लैग्स, हॉर्न्स, ड्रम्स? Because that's what they're banking on. So this is going to be very tricky for West Indies cricket. They can make great teams. They've had great players. I just hope they make the right decision. बट उनका तो कल्चर है ना यार, उनका भी कल्चर है, एंड प्लस इवन श्रीलंका फॉर दैट मैटर, हाँ, दे हैव दैट कल्चर वेयर द yeah. फैंस दे कम विद ऑल द They ड्रम्स. have a band that Yeah, plays. yeah, yeah, they are all proper fans. The And whether band, the team wins or loses, I've never seen a particular. yeah. I mean, ये दोनों में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज दोनों में ऐसा ही है. मतलब they'll come and back. Uncle Percy. Yeah, they're not Uncle as. Percy for Sri Lanka. So there's a there's called Bharat Army also. You come to England, you go to Australia, they go with a band and everything. There's There's a a Barmy Bharat Army Army also. also, but There is Barmy imagine the Army number of also. That people. is Imagine the number of people apart from Bharat Army. ये भी तो No, है. no. I mean, we're just talking about. all cheering for Virat Kohli. Biggest advertisement of the game. बस ये और कुछ मत बोलना, विवाद हो जाएगा. गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। अरे मस्ती कर रहा है। BK18. All right, guys. So बात that'll be शुरू, the बात उससे end. खत्म. Yeah, sorry. बात उससे शुरू, बात उसी पे खत्म. है ही बात वो ऐसा चीज. शेर, बात उसी पे. शेर, जंगल में एक भाई ही शेर शेर। होता है ना भाई. शेर ने भाई दहाड़ दिया तो है, कमेंट तो टाइम हो गया है कि मतलब अभी हम पॉडकास्ट को भी बंद कर दें आज के लिए. ये So yes, that'll be the end of the podcast, guys. Please show us some love on YouTube, on Instagram, Twitter, Facebook. We are everywhere. Wherever you don't want us to be, we are there in your feeds these days.
We've reached about 1.2 million people through our Instagram account. But unfortunately, we have only 8,000 followers from there. We request that all of you please follow us and keep showing us some love, and hopefully you enjoy our content. And if there's any feedback, please, we are always Keep it with yourself. we're open to that. And All we'll ears filter it open. also. We'll filter it also according to what we need, what we don't, and what we think Yeah. you need and you don't. So yeah, I mean, keep भाई them coming. इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट कम हो रहा है भाइयों. So yeah, hopefully we get to hear from you. See you, tada, and goodbye.